reconsidered because it violates the federal spirit of the Constitution. It actually attacks the federal spirit of the Constitution with a sledgehammer. Thank you very much, Mr. Speaker. Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji. Sir, I rise to oppose the introductions of the bill under the nomenclature of Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 under Rule 72/2. Sir, already the explicit reasons of opposing the legislative document has been deliberated by our colleagues. Sir, I would like to draw your attention that cooperative society is a state subject under 7th schedule via NT 32 of the state list in India in the Constitution. It has been already inserted. So it is basically a state subject. Absolutely that you are also raising a very pertinent argument which also needs to be delved into. But here in this issue, so there is a clear indication that the central government has been encroaching upon the territory of the state government. That is why Euror and the uproarious protestation has been cropping up across the nation. Sir, because this government has always been pleading for cooperative federalism, so this should have been reflected before the preparation of this legislation. I don't know whether all the stakeholders, I mean state governments, have been consulted upon before the preparation of this legislation or not. Sir, in the Cooperative Rehabilitation and Construction Fund to be constituted according to this bill, the profit-making multi-state cooperative has to pay 1 crore or 1% of the net profit. Strangely, the government is not paying a single paisa. This is illogical way one profit-making cooperative society shall pay for the revival of another loss-making cooperative society. This does not happen in the Companies Act also. So that is why, sir, we are opposing the bill, because the central government has empowered itself with the vast powers under the present bill. This may lead to concentration of power with the central government, which may impact the autonomy and functioning of multi-sectoral cooperative society and may create potential for misuse. Sir, take for example, under the present bill, the cooperative ombudsman will be appointed directly by the center without any apparent monitoring system to prevent corruption. And ombudsman is supposed to be unbiased. Sir, हो गया? सर हो गया सर हो गया सर एक मिनट सर हो गया सर an ombudsman is supposed to be unbiased and keep a check on the government by preventing them from abusing power. However, where an ombudsman is appointed directly by the government itself, it creates scope for undue influence over the decision of the ombudsman. That is why, sir, my only submission before you and the government, that given the intricacies, given the ramification and encroachment upon the state territory, this bill should be referred to the standing committee, sir. This is my only submission before you, so that it could be further scrutinized and all the controversies could be wiped off before presentation of the bill afresh. A.F. Arif ji. Cooperative Societies Amendment Bill 2020. As per the constitutional list and also judgment from Supreme Court, the central government can make any law without the consultation of the states in cooperative societies. The amendments in the bill is a proposal for the complete centralization of authority, and this is a frontal attack on the federal principle of our constitution. Necessary consultation is needed of the state governments. So I also support the members who are raised the arguments against the introduction of the bill. The bill may be sent to the subject committee, concerned as a committee. Sogat Rai ji. Under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the multi-state cooperative societies
Amendment Bill 2022. Originally, in 2002, when the bill first came, it was intended to facilitate the voluntary formation and democratic functioning of cooperatives as people's institutes. But it seems that with this bill, the central government is planning to take away the powers of the state government with regard to cooperatives. Sir, it has 4 proposals. One, setting up of cooperative election authority. Earlier, cooperative elections were looked after by the state government. It takes that away. 2, No. sir, चलो आप मैं भी बहुत कोऑपरेटिव में brief रहा में हूँ, बोल रहे। इसलिए मैं भी कोऑपरेटिव के सिस्टम को जानता हूँ। मैं जानता हूं, आप बहुत एक्सपर्ट है। कोटा में जो कोऑपरेटिव बना उसमें आप मेंबर थे, अब सेक्रेटरी भी थे, मुझे पता है सर। तो आपके बारे में हम लोग सब कुछ जानकारी लेके ही बोलते हैं। सर, they are proposing a cooperative revival fund, and 3, as Adhin mentioned, they are planning to set up a cooperative ombudsman. 4, they are increasing monetary penalties on multi-state cooperative societies. Sir, एक ही चीज आपको संज्ञान में लाऊं कि 2011 में 97 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज became part of the constitution. सर, उसमें क्या बोलता? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन करेगा? ये स्टेट करेगा। ये क्लियरली मेंशन्ड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अपन इस पे डिटेल डिस्कस हो जब कर लें। सर, 1 मिनट में खत्म कर दें। एंड the 243 ZR gives an application to multi-state cooperative societies. ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाए। ये बिल में बोला गया, बिल में ऑब्जेक्शन रीजन में बोला गया कि वो अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, in view of the insertion of the said part, it has become imperative to amend the act. It's not clear to me how the act is related to the constitution amendment. 2011, the amendment came. This government has been in power for 8 years. They have not amended. Suddenly, Mr. Shah comes forward with amendment of this. Sir, this bill impinges on the rights of the state. It impinges on the right of people to form cooperative on their own will, and it basically will act in bringing more control over multi-state cooperative societies by the central government. I am totally opposed. It's undemocratic, it's anti-constitutional, and it violates the spirit of cooperatives and cooperation in the... So send it to a standing committee, please. You have the power. If you write one line, then everything will go to standing committee. ये आप कर दीजिए. I am not a lawyer like other members. I am on a point of common man's view. This Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 was stoutly opposed, being opposed by me, because of the reason. Sir, actually, it gives an impression as though the chairman and vice chairman and members and the secretary are just selected by the central government only. Not, there is no democratic policies or principles adopted. Yes, sir. That is why the objection is there is no point of view from the democratic elected public. It is intended for the betterment of opportunities that has been extended to the... No, this is nothing but... I will conclude. Don't worry. I am not going to intrude in any other thing. Actually, the common man
has got an opportunity by using the cooperative movement. He has to say what has to be served by the government by distributing the usual way of small helps by way of cooperative movements. But this movement is totally, it has to be reckoned by democracy means only. But there is no democracy. Actually, government is making everybody, the heads of the institution are appointed by the government only. This is not fair. So that is a main objection from us. This may be not, since it has to be referred to standing committee. माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्यों द्वारा कुछ प्रश्न आए हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि संसद की क्षमता इस विधेयक को लाने की है कि नहीं। तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया था कि स्टेट के पर यह हमला हो रहा है। मान्यवर इस प्रकार का नहीं है। एक राज्य में जो सहकारिता की सोसाइटी काम करती हैं वो राज्य की होती हैं, और एक राज्य सहकारी समितियों के बहुराज्य सहकारी समिति में विलय का प्रावधान पहले से है, परंतु ये राज्यों के सहकारी सोसाइटी में नियमों के अधीन ही है। 2002 के अधिनियम में भी राज्य सोसाइटियों के बहुराज्य सोसाइटी में परिवर्तन करने का प्रावधान पहले से ही आपके यहाँ है। दूसरा, एक प्रश्न आया कि संविधान के 97 संशोधन को हम उच्च न्यायालय में निरस्त कर दिया गया था, पर सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में ये निर्णय दिया गया, ये संशोधन बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होगा, इसलिए इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, हमारे यहाँ चुनाव प्राधिकरण का जो सवाल आया है, ये प्रावधान में संविधान के 97 संशोधन के अनुसार है, और शेयर्स के मोचन का जो प्रावधान अंकित मूल्य पर प्रस्तावित है, जो कि सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, इन सहकारी समितियों के उद्देश्य केवल एक राज्य तक ही सीमित है, वो सूची 2 राज्य की प्रविष्टि 32 में आती है एवं राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीकों द्वारा पंजीकृत की जाती है। यह विधेयक बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए है जिनके उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में है, जो संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आती है और केंद्रीय पंजीयक द्वारा इसके पंजीकृत किया जाता है। यह विधेयक पूर्णतः संसद की विधायी क्षमता में है। यह विधेयक संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत प्रस्तावित है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 व उससे पहले बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1984 में भी इस प्रविष्टि के अंतर्गत संसद में ये पारित किए गए हैं। अतः ये विधेयक संसद की विधायी क्षमता में है। बाकी प्रश्नों के बारे में विधेयक पर खंडवार चर्चा जब होगी तब उसके उत्तर दिए जाएंगे। अतः मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन का अनुरोध करता हूं। बात करेंगे। आप सबसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप निश्चिंत रहे। नहीं, आपको सबसे विचार करेंगे इस विषय पर लाने के पहले, फिर विचार करेंगे। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में। अब मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन का अनुरोध करता हूं। आइटम नंबर 14 नियम 377 के अधीन आज सभी मामले बोलने का मौका मिलेगा। 377 के अधीन श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। The prime reason for India's poor performance in combating air pollution is the insufficient capacity building of municipal corporations and district subdivision administrations under the National Clean Air Program. Sir, reportedly most of the cities mandated to submit their respective city action plans have only replicated each other's initiatives. Some local governments have either underspent
or diverted the majority of funds towards projects not at all related to the National Clean Air Programme. Comprehensive monitoring mechanisms must be developed by the Union Government to prevent such activities of the local governments. From the financial year 2022-23, presenting evidence for the increased number of good days and reduction in PM10 annual average concentration is mandatory to receive the 15 Finance Commission recommended grants. This requirement neglects the need for essentials such as building a robust monitoring framework. Only 69 out of the 132 NCAP cities have real-time monitoring stations. In 2020-2021, the NCAP was clubbed with other items under control of pollution and the budget was marginally reduced. Many mostly polluted cities are provided with reduced NCAP funds or no funds at all. Thus, the states must be provided freedom in NCAP funds allocation since the top-down approach is not apt to reduce air pollution. Thank you very much. Rodmal Nagarji. मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान मां विजयसंधाम भेसवा माता, साका श्याम जी मंदिर नरसिंहगढ़, मां बुगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, घुरेल पशुपतिनाथ मंदिर ब्यावरा, जालपा मंदिर राजगढ़, बाग बागेश्वर महादेव चांचोड़ा, कोटरा की गुफाएं, 16 खंबे एवं प्राचीन गुफा मंदिर नरसिंहगढ़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये स्थान केवल राजगढ़ क्षेत्र के ही नहीं अपितु देश भर के श्रद्धालुओं की लोक आस्था का केंद्र हैं। प्रतिवर्ष यहां लाखों की संख्या में देश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु यहां आते हैं। श्रद्धालुओं हेतु आध्यात्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से मूलभूत एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की महती आवश्यकता है। अतः मैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि लोक आस्था के इन महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों को और अधिक गतिमान बनाने हेतु प्रसाद योजना, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प, आध्यात्मिक समाधान राष्ट्रीय मिशन में शामिल करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। श्री स्वागत राय जी। सर एक मिनट जी, स्वागत दा। हाँ सर सर जी जी सर, I want to raise the following matter under Rule 377. I would like to draw the attention of the Union Government through this August House towards the pendency of huge amount on account of Job Guarantee Scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act to the state of West Bengal. The total dues to West Bengal has come to rupees 7,300 crores. These funds have been lying pending despite the submission of proper accounts along with utilization certificates by the state government for the amount received earlier under the MGNREGA Act. Sir, our Chief Minister had sent two letters dated May 12 and June 9 to the Honorable Prime Minister on this issue. Sir, a delegation of TMC MPs went and met the Rural Development Minister, Giriraj Singh, to request him to release the funds. Under the Act, payment cannot be denied for more than 15 days to MGNREGA workers, but their wages, the wages of such poor people are being stalled. It is very unfortunate that neither any funds nor any response has been received from the ministry to the state's representations yet. Sir, this is beyond the ethics of the state scheme, and livelihood of the rural people in the state is suffering extremely. Sir, I may mention that not only under this scheme, but also under the House for All scheme, another central scheme, total dues to the state government, sir, total dues to the state government amount to nearly rupees 1 lakh crores. Please read How only can that the what I have state given. proceed in this way
this is beyond the ethics of the state scheme and the livelihood of the rural people. Considering the above circumstances, we will fervently request the Government of India to take necessary action to release all pending dues of the MGA, NREGA and other schemes like House for All to the state government to save the weakest section. I would request the central government not to use it as a political tool to beat the TMC government because the ruling party has been defeated in the assembly elections. Thank you, sir. धन्यवाद सभापति महोदय जी। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1960 में एक आदेश जारी किया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय अब से महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाएगा, लेकिन इस आदेश को लागू नहीं किया गया। वर्ष 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम वही रहा। चूंकि बॉम्बे नामक शहर अब मौजूदी नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट बॉम्बे के नाम पर ही है, जो उचित नहीं है। महाराष्ट्र शब्द का उच्चारण एक महाराष्ट्रियन के जीवन में विशेष महत्व को दर्शाता है। अंत इसके उपयोग को उच्च न्यायालय के नाम में भी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य के लोगों की विशिष्ट संस्कृति, विरासत और परंपराओं के रक्षण के लिए महाराष्ट्र अनुकूलन कानून राज्य और संप्रति विषय आदेश 1960 के एक खंड के कार्यान्वयन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट किया जाना नितांत आवश्यक है। इस संदर्भ में मैं यह भी दृष्टि है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम महाराष्ट्र हाईकोर्ट किए जाने वाली एक जनहित याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में 3/11/2022 में कहा है कि इस मामले में संसदीय प्रक्रिया है, अतः इसमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और तथापि यदि ऐसा परिवर्तन किया जाना है तो इसे संसदीय या विधायी निकाय के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। अंत भारतीय संविधान भाग 6 राज्य के अध्याय 5 राज्य के उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा के स्थान पर प्रत्येक राज्य के लिए राज्य के नाम से एक उच्च न्यायालय होगा। अंतर्स्थापित किए जाने हेतु संशोधन किए जाए और साथ ही अन्य राज्यों के संविधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया जाए कि वह अपने उच्च न्यायालय के नाम उन राज्य के नाम के अनुसार बदला जाए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। सभापति जी। श्री राहुल कसवा जी। धन्यवाद महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र के हनुमानगढ़ जिले के नौहर, रावतसर, भादरा तहसील के किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता रहा है। क्षेत्र के किसानों की कंपनी द्वारा खरीफ फसल वर्ष 21, रबी वर्ष 21-22 का बीमा क्लेम आज तक नहीं दिया गया। 35% से अधिक क्रॉप कटिंग की जो कर्मचारी क्रॉप कटिंग हुई है उसमें बीमा कंपनी कर्मचारी, राजस्व विभाग और कृषि के विभाग के अधिकारियों के उपस्थिति में किसानों के सिग्नेचर्स हुए हुए हैं क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट को लेकर। इसके बावजूद भी बीमा कंपनी ने स्टैक के अंदर स्टेट जो लेवल टेक्निकल असेसमेंट कमेटी है उसमें क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट के आंकड़ों को चैलेंज किया गया और बीमा क्लेम को भुगतान करने से मना कर दिया जा रहा है। वह स्टैक के द्वारा सैटेलाइट के डाटाज मांगे गए सेंट्रल गवर्नमेंट से, जबकि किसानों के द्वारा लगभग मांग की जा रही है कि खरीफ फसल 21 के अंदर और 22 रबी के अंदर जब किसानों ने सिग्नेचर कर दिए हैं तो उसके उपरांत भी सैटेलाइट के आंकड़े क्यों मांगे जा रहे हैं। आपत्ति की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने इस बात को स्वीकारा कि क्लेम सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के एवरेज के ऊपर दिया जाएगा, जिसका किसान आज भी विरोध कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि लोकसभा क्षेत्र के अंदर हनुमानगढ़ जिले के नौहर, भादरा, रावतसर में किसानों को खरीफ 21 व रबी 21-22 की क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाए। धन्यवाद सर। श्री राजेश वर्मा जी। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा जनपद काफ़ी बड़ा जनपद है और सीतापुर उसका बहुत बड़ा शहर है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों दैनिक यात्री, मजदूरी करने वाले लोग एवं व्यापारी प्रतिदिन
प्रातः सीतापुर से लखनऊ और संध्या में लखनऊ से सीतापुर आते जाते हैं, परंतु प्रातः एवं संध्या में कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनहित में सीतापुर लखनऊ यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एक मेमो ट्रेन के अप डाउन के संचालन हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। श्री सुब्रत पाठक जी। श्री सुब्रत पाठक जी। श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से नियम 377 के अधीन अपनी बात को यहाँ पर रख रहा हूँ। आजाद भारत के इतिहास में 2014 से लेकर आज तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय एवं प्राधिकरण ने जो ऐतिहासिक कार्य करके जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह अत्यंत सराहनीय है। किंतु मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, किंतु सीधा कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। भारतमाला योजना के से मैंने सतना से सिमरिया, सिरमौर, जवा, शंकरगढ़, प्रयागराज हेतु एक राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग की थी, जिसकी सैद्धांतिक सहमति भी हो चुकी थी। माननीय मंत्री जी का आश्वासन पत्र भी मुझे मिला था, किंतु आज तक दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क जो कि सर्वाधिक पिछड़े हुए क्षेत्र से गुजरने वाली है, उसकी स्वीकृति नहीं हो पाई। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तत्काल उक्त सड़क की स्वीकृति दी जाए। धन्यवाद। श्री खगेन मुर्मू जी। Thank you, Chairman Sir. I would like to draw the kind attention of Honorable Minister of Civil Aviation towards the pressing need of an airport in Malda. The nearest airports to Malda are Siliguri and Kolkata, which are 250 kilometers and 350 kilometers away, respectively far. These long distances have hampered economic activities along with loss of thousands of lives during medical emergencies. Since the 18th century, great quality jute, export grade mangoes, mulberry, and excellent quality silk have been the main sources of revenue for Malda. The requirement of an airport would not only facilitate the regional and international trade of these products, but also pave a path to realize the one district, one product initiative and would create an effective value chain to meet the actual demand for these products. In this regard, I would request the Honourable Minister of Civil Aviation, through you, sir, to expedite the construction of Malda Airport, which has been under construction since 2017. Thank you. श्रीमती संध्या राय जी। श्रीमती संध्या राय जी। नहीं। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से नियम 377 के अधीन मेरे भिंड जिले के लिए मैंने पूर्व में सभापति महोदय आपके माध्यम से पूर्व में सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से भिंड जिले में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने हेतु निवेदन किया था, जो आज दिनांक तक विचार में नहीं लाया गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि भिंड जिला कृषि उपज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है तथा कृषि विकास की अत्यंत संभावना है। वर्तमान में भिंड जिले में कृषि विज्ञान केंद्र तहसील लाहौर में खोला गया है, जो कि भिंड जिले से उसकी दूरी 60 किलोमीटर है तथा अन्य तहसीलों एवं अन्य 4 विधानसभाओं से भौगोलिक दृष्टि से भी दूर है, जिस कारण से कृषि विभाग से प्राप्त होने वाले लाभ सीमित किसानों को ही प्राप्त हो पाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को लाभ दिलाने के लिए खोले गए हैं। यहाँ यह भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि पूर्व में कृषि विज्ञान के नाम से भिंड जिला मुख्यालय पर कृषि विश्वविद्यालय को भूमि आवंटित कर बिल्डिंग बनाई जा चुकी है। तत्पश्चात तत्कालीन कारणों से कृषि विज्ञान केंद्र लाहौर में खोला गया। अतः ऐसी परिस्थिति में भिंड जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो न तो वहां पर भूमि आवंटन की दिक्कत आएगी तथा वहां पर बिल्डिंग भी बनी हुई है, शासन पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। अतः मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करती हूं कि भिंड जिले में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र प्रदान करें
जो कि भिंड जिले के किसानों के लिए वरदान साबित होगा तथा माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दोगुना करना, उसमें भी सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद। दिया कुमारी जी। Thank you, Chairperson, sir. Sir, I would like to bring to your notice that in 2015, the Archaeological Survey of India identified sites of religious and historical importance that attract very high tourist footfall under the Adarsh Smarak Yojana to implement disabled-friendly measures. These include solar wheelchairs and battery-driven carts, braille signage, tactile floors or pathways, special toilets and railings, etc. that can facilitate the entry of differently abled people at the archaeological sites. This noble initiative is a part of the Accessible India campaign, Saugamya Bharat Abhiyan, conceptualized by the Honorable Prime Minister to enable persons with disabilities to gain universal access to all archaeological sites. However, such development works in key historical marvels like the Kumbhalgarh Fort and the Ranthambore Fort is yet to take off. In this regard, through you, sir, I'd like to request the ASI to expedite the process of making these destinations more inclusive. Thank you, sir. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह जी। Sir, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was launched to provide comprehensive insurance coverage against crop loss on account of non-preventable natural risks to help in stabilizing the income of farmers. As Odisha is a natural disaster-prone state, the PMFBY is a major risk mitigation program for the farmers of the state. The premium subsidy sharing pattern is 50-50 between the central and the state governments. The state's share of the premium has been long delayed, while the centre has already released the funds. It is the state government which floats bids for the implementation of the scheme. And it is also the responsibility of the state government to make surveys of crop loss and grant compensation. केली की फसल अधिकतर मात्रा में होती है और इस वर्ष में करीब 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई क्षेत्र में केली की फसल की जा रही है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुए प्राकृतिक आपत्तियों तथा प्रतिकूल मौसम के केले की फसल पर अनेक रोग का प्रभाव बढ़ता है, जिससे ज्यादातर सीगाटोका CMV जैसे रोग से केले की पूरी फसल खराब हो जाती है और तथा आसपास के केले की फसल भी प्रभावित होती है। इस रोग का फैलाव उस क्षेत्र में तेजी गति से होने की संभावना भी बढ़ती है। पिछले लगातार 2 वर्ष से केले की खेती करने वाले बहुत किसानों का इसमें भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से और कृषि मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इन रोगों का समावेश हो, जिसके कारण जिन किसानों का नुकसान इन रोगों के रोग होने से उन किसानों का नुकसान हो रहा है, जिसमें से किसानों को इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मदद मिल सकती है। धन्यवाद। श्री तेजस्वी सूर्या जी। श्री सुमेधानंद सरस्वती जी। धन्यवाद सभापति जी। महोदय, देश में कोई भी व्यक्ति जब किसी वित्तीय संस्थान में ऋण हेतु आवेदन करता है तो वित्तीय संस्थान द्वारा उस व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के लिए क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है। वर्तमान में भारत में 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम कर रही हैं। RBI के नियमानुसार इनमें से सिविल रिकॉर्ड अनिवार्य है, जिसके विवरण के आधार पर ही वित्तीय संस्थान द्वारा आमजन को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न अनाधिकृत क्रेडिट ऐप व प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां कार्य कर रही हैं, जो ऑनलाइन ही लोन स्वीकृत कर देती हैं।
इनमें आमजन के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके भी लोन लेने जैसे साइबर फ्रॉड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही कई बार आमजन का लोन आवेदन इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसके रिकॉर्ड में ऐसा विवरण आता है जो कि उनसे संबंधित नहीं होता है। यह विवरण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की लापरवाही से दर्ज हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोन देने वाली अनाधिकृत ऐप पर कार्रवाई की जाए ताकि साइबर फ्रॉड बंद हो। साथ ही क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं को भी आमजन से रिकॉर्ड में सही विवरण ही दर्ज करने हेतु बाध्य किया जाए। धन्यवाद। श्री रंजीत सिंह निम्बालकर जी। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आपकी ओर से पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र में माढ़ा लोकसभा क्षेत्र से मैं चुन के आया हूँ। पुणे जिले के मुला और मुठा जो नदी है, रिवर है, वहां से जो इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेड वाटर है वो मुला मुठा में छोड़ दिया जाता है और वो छोड़ा हुआ पानी आगे जाके भीमा रिवर में मेरे क्षेत्र में आके मिलता है और भीमा रिवर के ऊपर उजनी डैम बना है। आज उजनी डैम का पानी इतना खराब हो चुका है कि पानी के ऊपर एक बड़ा सा लेयर, ऑयल का लेयर और गंदगी का लेयर पैदा हुआ है और वही पानी आगे जाके कई लाखों किसान पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उजनी से पानी छोड़ा जाता है और वो चंद्रभागा नदी में मिला जाता है। चंद्रभागा नदी जो महाराष्ट्र का भगवान विट्ठल की तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ चंद्रभागा नदी होती है। जो आपने लिख करके दिया है उसी को कृपया पढ़िए जी, वही रिकॉर्ड में जाएगा। जी जी, उजनी डैम का पानी आगे जाके चंद्रभागा नदी में मिलकर जाता है जो पंढरपुर स्थित भगवान विट्ठल जी की माता रुक्मिणी जी के विश्वविख्यात मंदिर से होकर गुजरती है। विट्ठल दर्शन के बाद आने वाले भक्त यहाँ चंद्रभागा के नदी में पवित्र स्नान करते हैं। ये प्रदूषित चंद्रभागा नदी का जल आके मुख में लेते हैं, फिर विट्ठल के दर्शन के लिए जाते हैं। आगे जाके इस नदी हमारे लोकसभा क्षेत्र से माढ़ा से और सोलापुर जिले अन्य विभागों में पीने के लिए और सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। महोदय, मैं नमामि चंद्रभागा परियोजना के तहत इस नदी का कायाकल्प करने के हेतु उचित कदम उठाने के लिए मैं आपसे कृपा और विनंती करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। श्री अर्जुन लाल मीणा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, मैं राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और भारत सरकार के शेड्यूल 5 में आता है। वर्तमान में उदयपुर संभाग से निर्यात आयात कारोबार की काफी संभावनाएं हैं। इस संभाग की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुएं कपड़ा, खनिज, पत्थर, संगमरमर के हल शिल्प, रत्न, आभूषण, खिलौने इत्यादि है। वर्तमान में निर्यात योग्य उत्पाद जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद हवाई अड्डे से भिजवाई जा रही है, जिससे संचालन लागत बढ़ती है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि निर्यात आयात व्यापार को आसान बनाने के लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स खोलने और उदयपुर हवाई अड्डे पर कार्गो सेवा शुरू करने के लिए उदयपुर हवाई अड्डे परिसर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के लिए पर्याप्त जमीन आवंटित करने का श्रम करावे। थैंक यू सर। श्री देवजी भाई पटेल। नहीं। श्री ब्रजेंद्र सिंह जी। Thank you, sir. Sir, Hisar is one of the counter-magnet areas chosen by National Capital Region Planning Board for its regional growth potential. It will also be housing an integrated manufacturing cluster soon. Despite the growing developmental activity, there is no direct railway connection from Hisar to Chandigarh, which happens to be the capital of Haryana and Punjab. This is a matter of concern not only for the people of Hisar, but for people of all of northwest Haryana, parts of Rajasthan and Punjab, for whom Hisar is important for its health facilities, educational institutions and sporting facilities. Currently, the shortest railway route from Hisar to Chandigarh takes almost 6.5 to 7 hours to cover a distance of just about 245 kilometers. This is double the time that it would take if there was a direct railway line which could possibly be laid between Barwala and Narwana or any other feasible route.
Therefore, through you, sir, I urge the government to consider this request and ease the access between Hisar and Chandigarh. Thank you. Mohan Unnithan ji. Thank you very much, sir. The Life Insurance Corporation has been functioning for the last The Life Insurance Corporation has been functioning for the last 66 years in country successfully. Today, the LIC has more than 75% of the market share. It provides employment to more than 12.5 lakh people across the country. Unfortunately, the Insurance Regulatory and Development Authority of India has come up with a draft proposal that it will adversely affect the future of the LIC. The detrimental clause of the proposal aims to hit hard on the commission of the LIC agents by linking it with management expenses and reducing the maximum commission of the agents from 25% to 20%. Sir, it does not stop here. By giving rebates on policy premiums purchased directly from the insurer, it is striking down the role of agents who are key players in this sector. Sir, the LIC is spread over the length and breadth of the country, including the deepest rural pockets where no company and their agents exist. If the IRDA India's proposal comes into implementation, it would gravely harm the whole LIC sector and will demotivate the agents who will eventually be driven out of the sector. This can create a situation, mass employment in the country. Sir, I request the Ministry of Finance to look into the matter and withdraw the unjust proposal of IRDA India. Thank you very much, sir. T.N. Prathapan. Thank you, sir. Trichy is known as a cultural capital of Kerala for its rich cultural and engagement with arts and literature. Trichy has also a good legacy of many temple arts. At Trichy, a central research institute for temple arts can preserve the legacy of temple arts and it can promote them to international attention. Due to lack of effective attention, many of the temple arts are losing its richness and traditions. The research institute can bring them together and it will facilitate a platform for flourishing their traditions. Trichy currently has a good potential for a network of temple pilgrim centers. It has academies of several performing arts. This atmosphere may strengthen a research academy of temple arts in Trichy. Such an institute can start courses for temple arts, encourage research of them, and facilitate a museum of equipments used for temple arts. Therefore, I request the Honorable Minister of Culture to establish a research institute of temple arts in Trichy. Thank you. Thank you, sir. Dr. Shri Gautam Sigamani Pon. Thank you, sir. So, Ulundurpeta Salem National Highway at Kallakurichi Parliamentary Constituency is an accident-prone zone, sir. Accidents take place daily, and in the last 11 years, from 2011 to 22, around 1,036 deaths have been reported, sir. This project started in July 2008 at an estimate of 941 crores. Is still not completed, but was said to be completed in 2013. Fact is, the work is still incomplete. Athur, Vayapadi, Udayapatti, Chinnasalem, Kallakurichi, Tyagaduruvam, Elevanasur and Ulundurpete are left as two-way roads, sir, instead of four-way roads. Four-way roads shrink to two-way roads and over bridges having dangerous curves causing tragic accidents. The NH connecting Salem and Chennai via Ulundurpet and Viluppuram is very vital as it has many education institutions and facilitates large number of small and medium-scale industries in Salem, Namakkal, Kadalur and Viluppuram districts. The speedy completion of the national highway, which is incomplete for more than 10 years, will help in bringing new industries here. Hence, I request the government should speed up the national highway NH 79 road connecting Salem and Ulundurpet, lying unfinished for several years now, and prevent the loss of unfortunate lives in such accidents.
Thank you, sir. श्री रघुराम कृष्ण राजू जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. Chairman, sir. The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act was enacted in 2003 with the aim to establish financial discipline, improve the administration of public finances, strengthen financial prudence, and reduce the revenue deficit, thereby to maintain a sustainable economic growth in the country. During the last 2 decades, it has been subjected to many amendments by the state governments to borrow more funds to meet the expenditure of their states, which resulted into a larger revenue deficit, contrary to the main objective of FRBM Act. Some state governments are resorting to use it as a tool to increase their borrowings by showing fictitious corporations that have no income of their own, where the repayments were being paid by the government. Because of such irresponsible and indisciplined borrowings of few state governments, the main objective of the FRBM Act is being defeated, and revenue deficit of those states is increasing instead of reduction. In view of the above, through this August House, I request the Honorable Prime Minister and Honorable Minister for Finance to embark on taking immediate corrective steps before it goes out of hands and save the economy of the state, especially from the state where I got elected. Thank you, sir. सभापति महोदय, देश में मछुआरों की हालत किसी से भी छुपी नहीं है। आज के समय में मछुआरों और मछली पकड़ने के अतिरिक्त कोई व्यवसाय नहीं होने के कारण वह अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। मछुआरों की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण बचपन से ही अपने बच्चों को मछली पकड़ने के व्यवसाय में लगा देते हैं। आज भी देश के मछुआरों के पास पक्के मकान नहीं है, इसकी वजह से उन्हें कोलीवाड़ा में रहना पड़ रहा है तथा यह कोलीवाड़ा समुद्र के किनारे ही बने होते हैं। समुद्र के किनारे होने के कारण ये लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन में जाते हैं। इनका परिवार बदलतर हालत में जीने को मजबूर है। मछुआरे अपनी नौकाओं को वर्षा के समय बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक इत्यादि चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उचित साधन नहीं होने के कारण उनकी नौकाएं जल्दी खराब हो जाती है। इनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण इनकी पकड़ी मछली जल्दी खराब हो जाती है। इनकी परेशानी यह खत्म नहीं होती है तथा मछुआरे मछली पकड़ने ज्यादातर खाड़ी इलाके में जाते हैं, जिसमें कीचड़ होने के कारण मछली नहीं पकड़ सकते। इस वजह से उनके व्यवसाय में कमी आ रही है। अतः अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करता हूं कि मछुआरों के भरण पोषण के लिए समय समय पर सरकारी अनुदान दिया जाना चाहिए। केरोसिन, पेट्रोल पर भी सब्सिडी सही वक्त पे देनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा उन खाड़ी इलाकों की उचित सफाई की जाए जहां पर मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं तथा सरकार मछुआरों के व्यवसाय बढ़ाने और इनके बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए कोई उचित योजना बनाए जिससे उनकी परेशानी जल्दी से जल्द खत्म हो सकती है। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री महाबली सिंह जी। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र काराकाट के अंतर्गत नवीन नगर विधानसभा क्षेत्र के अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन जिला मुख्यालय का मुख्य स्टेशन है सर। जबकि अनुग्रह नारायण रोड से मुंशी बिगहा, जीवा बिगहा सीरीज के रास्ते चरण, रेंगनिया, मझौली, सोनौरा, अकोढ़ा जो BRBCL और NTPC का
श्री बिगहा जीवा बिगहा सीरीज के रास्ते चरण रेंगनिया मझौली सुनौरा अकोढ़ा जो BRBCL और NTPC का श्री बिगहा जीवा बिगहा सीरीज के रास्ते चरण रेंगनिया मझौली सुनौरा अकोढ़ा जो BRBCL और NTPC का